Hello everyone, welcome back to the channel. You are watching Day 6 Part 1 of our Assam Arunachal Pradesh Tour 25. Today's journey takes us deeper into the heart of the Northeast with new landscapes, fresh experiences, and unforgettable moments waiting ahead. গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং আজকে হলো 3 নভেম্বর আর আমি এখন আছি তাওয়াংয়ে। আজকে এখন বাজে হচ্ছে 8:13। আমি অলরেডি লেট হয়ে গেছি ব্রেকফাস্টের জন্য, তো চলো তাড়াতাড়ি আজকে ব্রেকফাস্ট করছি। আর আজকে তাওয়াং মনেস্ট্রি যাব, নানান জায়গায় যাব। তাহলে চলো দেখা হচ্ছে ব্রেকফাস্টে। और बीच में लंच के लिए हम यहाँ आएंगे। क्लियर? क्योंकि कहीं अच्छा होटल मिल नहीं रहा, पैसे भी दो। कल उसने 150 वाली थाली हमें 200 में दे दी, सर ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया और बेकार भी खाया किसी ने नहीं। उसका रीजन ये है ना, वहाँ यहाँ कोई बड़ा होटल है भी नहीं है। कितना अच्छा भी ढूंढ लोगे तो 10-15 से ज़्यादा सीटिंग है भी नहीं। वो सफ़ेद छोले होते हैं, बड़े चने और चावल, अचार पापड़ सलाद देगा बस। क्लियर? क्लियर है जी सर। दिन में आके जी फिर चावल खिला दिया, मुझे रोटी ढूंढ रहा हूँ। बस ठीक है, छोले चावल मिलेंगे दिन का लंच में यहाँ। वो रात को होगा। ओके, बुमला चले तवांग चले। हमारे ग्रुप से तवांग चले। We are बुमला ब्रिगेडियर्स। बुमला चले तवांग चले, हमारे ग्रुप से सबकी चले, हमारे ग्रुप से सबकी चले। हिंदी रिपीट कराना पड़ेगा ना। मलयालम में तो हम लोग अच्छे से তো আমাদের ব্রিফিং হয়ে গেল, এবার আমরা রেডি হব। এবার আমরা ট্রাভেলারে করে তাওয়াং মনেস্ট্রি দেখতে যাব। আর हेलो कौन है दिखने रहा? अच्छा ভিডিও কাম नाम क्या है? फैजन, बहुत प्यारी हो। अच्छा है नहीं रहेंगे। मम्मी कहाँ है? मम्मी काम पे है। मम्मी कहाँ है? अच्छा, और आप आज खेलोगे कि पढ़ाई करोगे? चलो टाटा टाटा। If you have been following our journey so far, thank you for your support, and if you are new here, don't forget to like, share and subscribe. Now let's begin day 6 and see what this beautiful day has in store for us. हर एक टीम की बारी है। ओनली 6 पीपल अंदर आएंगे ग्राउंड में। ठीक है, मैं बता देता हूँ डेमो। और थोड़ा करो, इधर बहुत जगह है। और बड़ी और थोड़ा टीम वाइज बुलाऊंगा। 6 पीपल फ्रॉम 1 टीम। फर्स्ट राउंड ऐसे एक राउंड चलेगा। लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है किस 6 को भेजता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 60 कुछ नहीं करना, हम एक विसिल बजाएंगे।
डीप अलर्ट यहाँ से देगा बिल्कुल बस्ती अंदर। Even indoors, the excitement doesn't stop. Here are some interesting indoor games we are playing. आपको टीम को एक इधर ऐसे स्प्लिट कर दो 6 मीटर। जो नियर बाई 1 होगा आएगा 1। उसके बाद ही आफ्टर वो जब 1 बोलेगा उसके बाद ही 2 पहले नहीं बोलेगा। जिसके पास 2 होगा वो 2 पे रख देगा। 2 पूरा लाउडली बोलना है। काउंटिंग पूरी करनी है। वो कैसे? वो मैं यहाँ पे हूँ उसके पास 26 के ऊपर 3 नंबरिंग शुड बी है 4 और लाउडली आप और ये 6 भी है। मैंने 1 बोला उसके बाद मेरा नंबर आया तो आई कैन मूव हियर से बट एट द सेम टाइम दोनों पे पैर नहीं रहेगा। दिस इज फाउल। क्लियर? 32 कंप्लीट होती हम टाइम वॉच करेंगे कि किसने कितनी जल्दी करा। टाइम इज द मेन थिंग। अगर एक के फॉल्ट होने क्लियर? In this extreme cold environment, staying active is very important for our physical fitness and overall well-being. That's why these indoor games play such a vital role in our daily routine. They help us warm up our bodies, improve blood circulation, and keep our energy levels high before stepping back out into the cold. Instead of staying idle indoors, playing these games keeps us moving, refreshed, and mentally relaxed. It's not just about fun, it's an essential warm up process that helps us cope better with the harsh weather conditions and continue our journey comfortably and safely. 13 बोला और 21 बोला तो कैसे जंप करेंगे? दूर दूर करने से ठीक रहता। वो 23 17 13 25 पास पास है। मतलब आसपास के नंबर पर नजर रखेंगे। अच्छा रैंडम नंबर बोल सकते हैं कि क्रॉनिकल 1 2 3 4 5 सारे डेमो दे रहे सुन लो ना। सब ध्यान दे लो इधर एक बार। सुन लो ना फिर আমরা এখন বেরোচ্ছি তাওয়াং মনেস্ট্রি দেখতে আর টুকটাক আরও জায়গায় যাবো। তাহলে চলো হর হর মহাদেব। हर हर महादेव। मोबाइल आसे आपने मोबाइल किए मोबाइल की Now we have started our journey towards the famous Tawang Monastery, one of the most sacred and breathtaking destinations in Arunachal Pradesh. As we move ahead, the roads are surrounded by snow-covered mountains, winding paths, and stunning views that make every moment of this journey special. The weather is cold and challenging, but the excitement of reaching Tawang keeps us motivated. This journey is not just about the destination, it's about experiencing the beauty, the silence, and the spiritual atmosphere that slowly unfolds as we get closer to Tawang Monastery. Now we are entering into the Tawang Monastery,
one of the largest and most revered monasteries in India. As we step inside, a deep sense of peace and spirituality surrounds us. The prayer flags fluttering in the cold mountain breeze, the chanting echoes, and the serene atmosphere instantly calm the mind. After a long and challenging journey through the mountains, reaching this sacred place feels truly special. This is not just a tourist spot, but a place of devotion, history, and spiritual energy that leaves a lasting impression on everyone who visits. Tawang Monastery, also known as Golden Namge Hatse, is one of the most important and sacred Buddhist monasteries in India. Situated at an altitude of about 10,000 feet above sea level in Arunachal Pradesh. It is the largest monastery in India and the second largest in the world after the Potala Palace in Hasa, Tibet. The monastery was founded in the 17th century around the year 1880 to 1681. By the Merak Lama Lodri Gatso, under the guidance of the 5th Dalai Lama. It belongs to the Gelugpa sect of Mahayana Buddhism and holds immense spiritual, cultural, and historical significance for Buddhists, especially the Mompa community. Spread over a vast area, Tawang Monastery is surrounded by massive stone walls and offers breathtaking views of the Tawang Valley and snow-covered mountains. Inside the monastery, there is a magnificent 3-story assembly hall known as the Dukhang, which houses a giant 8-meter tall golden statue of Lord Buddha. The interiors are beautifully decorated with traditional Tibetan paintings, murals, thangkas, and ancient scriptures. The monastery also serves as a center for Buddhist learning, housing residential quarters for monks, meditation halls, and a well-preserved library containing rare Buddhist texts and manuscripts. Important festivals like Losar, Tibetan New Year, and Torgya festival are celebrated here with great devotion
attracting visitors from across the region. Beyond its religious importance, Tawang Monastery is a symbol of peace, resilience, and spiritual strength. The calm atmosphere, echoing chants, fluttering prayer flags, and panoramic Himalayan views create a deeply spiritual experience. Visiting this monastery is not just a journey to a destination, but a soulful experience that stays with you long after you leave. The architecture of Tawang Monastery is a magnificent example of traditional Tibetan Buddhist design perfectly adapted to the harsh Himalayan environment. The monastery is built like a fort-filled complex, enclosed by massive stone walls that symbolize protection and strength. Perched on a hilltop, it overlooks the beautiful Tawang Valley, offering a commanding and serene presence. The entrance leads into a spacious courtyard, which serves as the central gathering area for religious ceremonies and festivals. Surrounding the courtyard are monks' quarters, administrative rooms, and prayer halls, all constructed using stone, wood, and mud, materials that help maintain warmth in extreme cold conditions. At the heart of the monastery lies the Dukhang, or main assembly hall, a 3-story structure supported by thick wooden pillars. The interior features intricately carved wooden beams, vibrant murals, and colorful thangka painting depicting Buddhist deities, mandalas, and scenes from sacred texts. The sloping roofs with golden finials and traditional motifs reflects classic Tibetan architectural elements designed to withstand heavy snowfall. Windows are relatively small, helping retain heat while allowing soft natural light to illuminate the interiors. Prayer wheels, stupas, and decorative carvings are carefully integrated into the structure, blending spiritual symbolism with functional design. Overall, the architecture of Tawang Monastery is not just visually impressive
but also deeply symbolic, representing harmony between spirituality, nature, and human craftsmanship. এখন আছি তাওয়াং মনাস্ট্রিতে। আর দেখো এই দোকানটা থেকে এই তাওয়াং গার্ডেন নামঘিয়াল হচ্ছে রিচুয়াল শপ। এটা তাওয়াং মনাস্ট্রিটারই গায়ে রয়েছে। এখানে আরেকটা শপ আছে খাওয়া দাওয়ার শপ, দোকানপাট। তো এই তাওয়াং মনাস্ট্রি থেকে কিছু জিনিস কিনলাম, একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট কিনলাম, একটা কাঠের ইয়ে কিনলাম, বেশ ভালো লাগছে দেখতে। তাহলে চলো এবার চলে যাবো, চলো। তাওয়াং মনাস্ট্রিতে আছি। আর এই দেখো খুব সুন্দর জায়গাটা, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি বুদ্ধা স্ট্যাচু দেখতে। आएगा सबको बोल दिया, हम बोला है কি সুন্দর না এই গেটটা। सबको बोल रखता है। Now we are going to visit the Buddha statue. Inside the monastery, one of the most serene and spiritually powerful spots here. This is a moment of silence, reflection, and deep connection. Here we are at the Buddha statue, which is truly unique because he is holding a bowl in his hand. This bowl, known as a begging bowl, symbolizes simplicity, humility, and the monk's path of renunciation. Unlike many other Buddha statues, this one reminds us of the essence of selflessness and spiritual discipline. Every detail, from the serene expression of his face to the gentle posture of his hands, reflects peace, compassion, and the profound teachings of Buddhism. Seeing the statue up close is not just a visual experience, it's a moment of reflection and spiritual connection. আচ্ছা, যেটা আমার মনে হলো যে বুদ্ধদেবের তপস্যা, বুদ্ধদেবের নির্মাণ লাভের পদ্ধতি, এরকম ধরনের আরও যে সমস্ত শিক্ষণীয় ব্যাপার বা বুদ্ধিস্ট কালচারকে যেগুলো ডিসক্রাইব করে সেই ধরনের। তো চলো সেটা একটু দেখে আসি কি আছে এখানে। তো দেখো এখানে বুদ্ধদেব তার শিষ্যদেরকে এখানে নানান রকম কিছু জিনিস শেখাচ্ছেন। তো এই যে 21 দ্য নাগা মুকালেন্ডা গিভিং শেল্টার টু দ্য বুদ্ধা 22। আচ্ছা এখানে 1 2 3 4 করে আছে,
চলো যাচ্ছি। এখানে দেখো আই লাভ তাওয়াং আছে। চলো আমরা একটুখানি এখানে দেখি কি লেখা আছে। লেখা আছে দ্য স্ট্যাচুজ অফ বুদ্ধা সাক্যামুনি প্র্যাকটিসিং arduous disciplines of 6 years, turning the wheel of dharma. তো চলো এখানে the Bodhi Stupa with relic and statue of his eminence, the 13th Omniscient Khunchen, the pioneer of the region demand. আচ্ছা, এখানে তো সেগুলোকেই ডেমনস্ট্রেট করা হয়েছে। চলো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখান থেকেই শুরু হয়েছে। ছবির মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। দেখো ছবিগুলো আর লেখাটা একসাথে তুলতে পারলাম না, শুধু লেখাটা তুলে নিলাম। লেখাটা তুললেও অনেক সময় বোঝা যায়। দেখো সুজাতার পায়েস খাওয়ানো, এটা মাকে পাঠাবো ওই ছবিটা। স্ট্যাচু রয়েছে এখানে। চলো আর দেরি করবো না, চলে যাই। সবাই অপেক্ষা করবে আমার জন্য, ওরা নেই এখানে, আমি একাই এসেছি। চলো, আই লাভ তাওয়াংয়ে ছবি তোলা হয়ে গেছে। চলো তাওয়াং শহরটা একটু ছবি তুলে নিই। চলো যাই এবার, ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। Now I am wearing the traditional Arunachal dress, a beautiful and vibrant attire that reflects the rich culture and heritage of this region. Each piece of the dress tells a story about the local tribes, their traditions, and their connection with nature. Wearing it gives a real sense of being a part of the local culture, experiencing firsthand the colors, patterns, and craftsmanship that have been passed down through generations. It's not just clothing, it's a celebration of Arunachal Pradesh identity, history, and pride. Being dressed like this truly makes the experience here more immersive and memorable. मुझे भी पहना दो। हो गया? आपका पेन है? Oh, इधर आइए। How are you looking? Fine, fine. Nice. Can I take a shot? Dr. Bhai. Yes. हो गया?
So that's it for today's blog. We hope you enjoyed every moment of our journey, exploring the Tawang Monastery, seeing the beautiful Buddha statue, experiencing the serene interiors, and even getting a taste of Arunachal culture with the traditional dress. Thank you so much for joining us on this adventure. Don't forget to like, share, and subscribe if you enjoyed the video, and stay tuned for more exciting experiences from our Assam Arunachal Pradesh tour. Now we are capturing some beautiful memories, moments that we will cherish forever. From the stunning landscapes to the serene interiors of the monastery, and even the fun of wearing traditional Arunachal dress, every experience here is special. These are the memories that make the journey truly unforgettable and remind us of the beauty, culture, and spirit of the amazing place.